back to another video. In this video, I'll show you how you can change your background with just a few clicks. So yeah, let's start. अच्छा सबसे पहले आपने जो रेक्टेंगल टूल से उसको सिलेक्ट कर लेना. मैं आपको सबसे पहले भी स्काइज का बता रही हूँ कि हाउ यू कैन चेंज डिफरेंट स्काइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द एडिट एंड क्लिक द स्काई रिप्लेसमेंट देयर. आपके सामने ये ओपन हो जाएगा आपका छोटा सा मेन्यू. अब इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि शिफ्ट एज, फेड एज, उसके अलावा आपके पास स्काई एडजस्टमेंट्स हैं जैसे कि ब्राइटनेस, टेम्परेचर, स्केल, ये सब. अच्छा, आप इसको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. ठीक है, आई विल शो यू अ लिटिल बिट कि कैसे थोड़ा बहुत वर्क करते हैं. जैसे कि मैंने अभी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ किया है तो इट विल बी अ लिटिल ब्राइट. सो अगर आप इसको टेम्परेचर को करेंगे सो इट विल शो अ लिटिल चेंजेस इन द टेम्परेचर एज वेल. It just would be according to your preference. Okay, after adjusting it, just click on the OK, and yeah, you can see how easily we have changed the sky. Okay, I forgot to show you the different skies present in this by default. So yeah, go again to the edit, click on the sky replacement again, and can you see the little drop down here where my mouse cursor is? Click on there और आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट स्काइज को शो करेंगे ये. यू कैन सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम देयर एंड या so be patient. Yeah, as you can see the menu is open now. You can see different skies here. Yeah, you can easily select any one from here and adjust the settings according to your preference. Okay, just click on OK. Now we'll go towards our second picture, that is this. Now I'll show you how you can change the background of your picture. So first of all, what you need to do is click on the object selection tool. After clicking on this, you can select it as however you want to, but I'm just gonna go with the select the subject from above. And after selecting the subject, it is going to select the subjects on its own. यानी मुझे खुद जाके उसको रेंडमली सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा. ये सब्जेक्ट को खुद सिलेक्ट कर लेगा. आप चाहें तो उसको खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, थ्रू विच एवर टूल यू वांट टू. ओके, so yeah, it'll take some time. Be patient, the progress is going on. And yeah, so in this way you can easily select your subject. After selecting it, can you see there is a little bit detailing missing? So what I'm gonna do is, now after this I'm gonna go and select the object selection tool, and with the help of object selection tool I'm just gonna adjust it. So yeah, and I'll show you how you can do the minor detail as well. So quick selection tool, go select the quick selection tool, press alt, keep pressing alt when you want to adjust this. It'll show the minus sign on it. So after this, can you see I've just control C, control V, and another layer is created. Press the control T to adjust it. You can move it anywhere when you press the control T. Okay, after this, what I'm gonna go is select the gradient tool. You can and after selecting gradient tool, you can just select the colors. In my case, I have selected these two, and then just go for it and change the background. Boom. Can you see how easy it is? After this, I'm just gonna show you another way. I'm just placing a random picture here like this. So yeah, you can adjust it however you want. What you have to do is, I hope you get it, कि आपने फाइल पे जाना है, उधर से प्लेस एम्बेडमेंट पे क्लिक करना है to import a picture in a already made project. So yes, after dropping it here, आप इसको थोड़ा adjust कर लें however you want to. Then click on layer 1, press Ctrl T. After pressing the Ctrl T, you can adjust it now however you want to.
the picture present on the layer 1. Or you can make your thumbnails with this easily. आप इजीली अपना कोई भी गेम का थंबनेल, कोई भी वीडियो का थंबनेल इसकी मदद से बना सकते हैं इजीली, बैकग्राउंड को चेंज करके, लाइक दिस। आप यहाँ पे अब जो है टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। कैन यू सी आई एम एडिंग द टेक्स्ट हेयर। सो टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। जो भी राइटिंग रखनी है, जो भी कुछ करना है, यू कैन सी फ्रॉम द मेन्यू दे आर शोइंग कि आप उसका साइज सब कुछ अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक रख सकते हैं। या लाइक दिस। नाउ आई एम जस्ट गोना डिलीट इट आफ्टर सम टाइम। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव है, तो आप उसको ब्लर भी कर सकते हैं। वट यू नीड टू डू इज़ गो टू द फिल्टर, select the blur, select Gaussian blur and just blur the part you want to blur. Select on that layer, okay, which you want to blur. If you want, select the layer, so it'll just blur the part which is selected already. So be careful in this. Okay, after blur, you can now easily go to the any menu or blur it easily. Now after blur, I'm just gonna delete this from the delete button like this. After this, I'll show you a little bit properties use as well. What you can do is go to the properties, go to the adjustment. Now click on the color balance, and you can balance the colors as well when you change the background. So yeah guys, in this way you can easily edit your change your picture background. For more videos, don't forget to like, share and comment, and keep watching my videos. Allah Hafiz.